Okay. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Sambit Patel from your +2, which college? Sir, MSCST Barpali. Barpali. Renuka Pradhan? Renuka Pradhan? Renuka Pradhan? Rupali Priyadarshini Sahu? Yes, sir. Rupali Priyadarshini Sahu. Which college? +2? BJV. BJV. You inside enter in enrollment chart box. Your enrollment number. Yes, sir. Anisri, with this. Okay. Anisari. Renuka Pradhan. Yes, sir. Which college? Yes, sir. Which college? NSCB. Sambalpur. हाँ सर. ठीक है जी. Any sir? Yes, sir. Which college? Autonomous school कितना पड़ा? Kendrapada. +2. Kendrapada. Okay. Gayatri. Yes, sir. College. Rajdhani College. Rajdhani College. Sachin. Yes, sir. Which college? Sir, +2. +2. Sir, +2 Dhenkanal Autonomous. Dhenkanal Autonomous. Okay. Monalisa Patro. Yes, sir. Which college? Gayatri Women's College. Barampur. Gayatri Barampur. Yes, sir. Gayatri Women's College. के शशिकांत थला टीचर शशिकांत. हाँ sir, chemistry teacher. He was not. He is not present now. Okay. Okay, sir. Okay. Oliva Jana. Yes, sir. Which college? Sir, Bhadrak Autonomous College. Bhadrakot. Kavita Pradhan. Yes, sir. Which college? NSCB College, Sambalpur. Sambalpur. Okay. Champa. Who is Champa? Jyoti Jana. Yes, sir. Which college? Yes, sir. Sir, Khalikot College, Barampur. Barampur. Okay. Yes, sir. Okay. अच्छा. Hello, Jyoti. sir. Tiku Maji. Kavita Pradhan. Kavita Pradhan. Yes, sir. Which college? NSCB College. Sir, I told no. Okay. Champa Tudu. BJB. Bhubaneswar. BJB College. Bhubaneswar. Okay. Any more? Now it is 17. Shall we start? Devasmita. Devasmita Sethi. Who is Devasmita Yes, sir. Sethi? Yes, sir. Which college? KSUB Bhanjanagar. Bhanjanar. KSUB College Bhanjanar. Okay. Now I'm starting phase rule.
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we'll start. The phase rule. Phase rule. What was that? What is the video? Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Now I'm starting phase rule. So it Sir, is you a are not useful. audible. Am I audible? No, sir. Yes, sir. Now it is audible. So please mute. Sir, All of you please, sound is slow, sir. so all of you please mute. Okay. Okay. Audible. Yes, sir. Audible. Clearly audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we'll start phase rule. What is phase rule? It is a useful generalization to study the heterogeneous system at equilibrium. And this phase rule was deduced by J. Willard Gibbs, an American physicist, in 1876. 1876. 1876 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜେ ୱିଲାର୍ଡ ଗିବ୍ସ ବାହାର କରିଥିଲେ phase rule. Phase rule was deduced by J. Willard Gibbs of American scientist in the year 1876. That is why it is also known as Gibbs phase rule. In honor of scientist Gibbs, Willard Gibbs, the rule is known as Gibbs phase rule. And with the help of this rule, a diagram known as a phase diagram can be drawn. Phase diagram can be drawn with the help of the rule. With the help of the phase rule, a diagram known as a phase diagram can be drawn with the help of which the effect of temperature, pressure, and concentration on the heterogeneous system at equilibrium can be studied. Actually, phase rule is a useful generalization to study the heterogeneous system at equilibrium. But heterogeneous system equilibrium point thile taku study kariya pai phase rule avashyakata achi. So what is statement of phase rule? What is statement of phase rule? Okay, it states that like a phase rule statement. Phase rule. What is phase rule statement? It states that It states that the sum of the number of degrees of freedom. Write down phase rule. What is phase rule? It states that the sum of the number of degrees of freedom, write down phase. What is phase rule? It states that sum of the number of degrees of freedom and The degree of freedom. and number of phases PHASES, number of phases. Samat, have you entered the enrollment number in the chart? All of you? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Samat, Yes, sir. Yes, sir. enrollment number Samat chart entry kala to? हाँ, sir. Okay. Code sir, ମୁଁ କାଇଁ enrollment number entry କରିନି ତ? को चार्ट बॉक्स रे Chart box. ସେ ଯୋଉ ତିନିଟା
छोट छोट टोपा अच्छे सेठी कले इन कॉल इन मेसेजेस आसीबो सेठी एंट्री करिया पे हाँ चलो ସେଇଥିରେ ହିଁ चार्ट बस कर दे समझते सर अटेंडेंस एक्चुअली मिनिमम सब दिन आज बहुत स्लो सुना जाउची सर साउंड स्लो सुबुचे बहुत स्लो सुना जाउची नहीं सर स्लो स्लो नहीं सर तो म्यूट कर ले पे भी समझता हूँ वॉइस क्लियर स्लो सुबुचे जी ते म्यूट करो समझते समझते म्यूट करो सर ईयरफोन देले सर इट्स क्लियर मी आसी वॉइस हैं हेलो ओके हाँ सर yes ओके sir बस इट स्टेट्स दैट sum of the number of degrees of freedom and number of phases PHASES number of phases exceeds 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 the number of components by 2 exceeds the number of components by 2 TW2 right हाँ right sir हाँ yes सर sir हेलो it states that the sum of the degrees of freedom and the number of phases exceeds the number of components by 2. Now mathematically f is equal to the f plus p, f capital f plus p plus capital P is equal to c plus 2. F plus p is equal to c plus 2, right? कौन लिखलो? F plus P is equal to C plus 2 हाँ, अरविंद बेहरा लिखलो f plus p is equal to c plus 2 what is f what is f or f is equal to c minus p plus 2 or f is equal to c minus p plus 2, right? This is phase rule. What is phase rule? F is equal to c minus f is p equal to plus 2 very good. For f is equal to number of degrees of freedom. For f is equal to number of degrees of freedom. P is equal to number of phases. P is equal to number of phases. C is equal to number of components. sir F is rule equal टा to आउ थरे टिके कहि दियंतु F is equal to C minus P plus 2. It is phase rule statement, mathematical statement. F is equal to C minus P plus 2. It states that sum of the number of degrees of freedom and number of phases exceeds the number of components. Exceed अतिक्रम करुचे अधिक होची exceeds the number of components by 2. 2 ठो अधिक component रो 2 मिसुची. तर F plus P is equal to C plus 2, right? बुझौची? हाँ sir हाँ सर Okay. F is equal to C minus P plus 2. F is equal to C minus P plus P plus plus 2 2 what is F? F is equal to number of degrees of freedom. Freedom F is F plus freedom. P is number of phases. PHASES phases. C is equal to number of components. Now, what is the phase? What is the degree of freedom? What is the component? Now we shall define the terms. Let us phase. PHASE phase. What is the phase? So हम कहूची लेक्चर टाइम पर होची what is the phase? ताकि सुनो. A phase is defined as a homogeneous, physically distinct part of the system which is separated from other part of the system by a definite boundary surface. Right? Phase is defined as any homogeneous and physically distinct part of the system which is separated from other part of the system by a definite boundary surface. बुझाते कि आगे कौन कहली phase is homogeneous, पूरा homogeneous, आउ के नथिबो एवं physically distinguish करी होथिबो, physically distinct part of the system which is separated from other part of the system by a definite boundary surface.
and phase may be solid, liquid, and gas. You see, a single gas, suppose single gas like hydrogen or oxygen, it consists of single phase. Kevala hydrogen could single phase. Kevala oxygen, single phase. Also, mixture of gases, hydrogen plus oxygen. Ketra phase habo? H2 plus O2, mixture of gases. Gas mixing gala, hydrogen gas, oxygen gas. Ketra phase habo? Data phase. ନାଇଁ ଏଠି ଦିଟା ଫେଜ ହବନି କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଗ୍ୟାସ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯାଉଛି ତ ଥରେ ଗ୍ୟାସ ମିଶି ଗଲେ ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏଉଠି ଏତିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଉଠି ଏତିକ ଅକ୍ସିଜେନ କହିପାରିବାନି ତ ଏଟା ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ ଇଜ ହୋମୋଜିନିୟସ ଫିଜିକାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରି ହଉନି ଥରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରକୁ ଗନା ଏୟାର ଗନା ତ ଏୟାର କହିପାରିବ କି ଏତିକି ଭାଗ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏତିକି ଭାଗ ଅମ୍ଳଜାନ କହିପାରିବ କି ତ ଫିଜିକାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରି ହବ ନାହିଁ ତ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଗ୍ୟାସ ଇଜ ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ बुझला what is the phase right a single liquid water only water with a single phase apa kenda kanala kulano go hello water single liquid water is a homogeneous single phase calculato okay please mute water is a single phase because it consists of it is homogeneous right two or more liquids which are completely miscible कितना phase habo completely miscible water plus alcohol one phase water plus alcohol one phase they're completely miscible मिसि जाउछंती since there is no boundary surface गोटे boundary नाही जे मु कहि परिबी एउठी देबा alcohol एउठी देबा water कहि परिबे कि water रे alcohol मिसिला परे आमे कहि परिबे कि गोटे boundary अछि कि कहि परिबे कि गोटे एउठी दिगला कहि परिबे कि नहीं so it is single phase किंतु two or more liquids which are immiscible water and benzene water and kerosene water and oil केतना phase data phase water and benzene केतना phase data water and benzene mercury केतना phase tinta immiscible मिसिबे नहीं in case of solids गोटे solid गोटे phase mixture of solids जितना solid मिसिबो सतिदा phase right हम calcium carbon solid अछि मिसता संग अछि calcium oxide केतना phase हबो calcium carbon solid दीटा phase तो phase ता solid अवस्था में परिबो लिक्विड अवस्था रे गैस अवस्था रे परिबो राइट अच्छा calcium carbonate भागी गेला CaO plus CO2 केतना phase data के को calcium carbonate कौन कहली मु CaCO3 is equal to CaO plus CO2 gas plus CO2 gas हमरा केतना phase हला गोटे phase गोटे केमती सुना आउथरे कहूची data phase सुना दीटा phase सुना आगे बुझट के CaCO3 bracket S वाला solid calcium carbonate solid is equal to CaO bracket S वाला solid plus CO2 bracket G माने gas कितना phase हला data CaCO दीटा केमिति को के CaCO3 solid गोटे phase डाहण पटे मिलला CaO calcium oxide solid गोटे phase प्लस डाहण पटे मिलते कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गोटे phase समता कितना phase हला तीनटा हला दीटा solid phase के ना calcium carbonate and calcium oxide आ गोटे गैस पजला CO2 राइट बुझल की ट्रू सॉल्यूशन कितना phase ट्रू सॉल्यूशन लूना पानी चीनी पानी कितना phase single phase पूरे ड्रॉप ऑफ वाटर रे अछि पूरे बोतल रे ड्रॉप ऑफ वाटर अछि कितना phase पूरे ड्रॉप ऑफ वाटर अछि पूरे टिपी दिया बोतल भीतर पूरे बोतल रे टिपी दिया छी पूरे छोटा होम पदी सीसी ताते गोटे पानी ड्रॉप टे अछि कितना phase
data phase. एक लिक्विड वाटर अच्छी लिक्विड ड्रॉप और वाटर वेपर है Water vapor, हाँ. वाटर वेपर अच्छा पीस ऑफ मोल्टन आइस गोटे बिकर आइस अच्छी से बिकर वाच ग्लास घोड़ा है केतरा फेज मोल्टन आइस आइस ता मेल्ट है कि गोटे बिकर अच्छी बिकर कवर दे है केतरा फेज दुईटा फेज लिक्विड वाटर गोटे और वेपर गोटे बुझिलो बुझियो वेपर अच्छी हाँ सर. Yes, sir. अब मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन केतरा फेज गोटे phase. गोटे फेज गैस गोटे फेज वे क्लियर व्हाट इज फेज क्लियर ना व्हाट इज फेज अरे Yes, sir. all of it clear so phase is defined as a homogeneous and physically distinct part of the system which is separated from other part of the system by a definite boundary surface a definite boundary surface थिबो तो phase को आजिवो बुझिराबे ना component what is component now the number of components of a system लिख देंगे what is component component bracket C the number of components of a system देखुछ हाँ सर. the number of components of a system at equilibrium the number of components of a system at equilibrium number of components of a system at equilibrium is defined as the smallest number of is defined as the smallest number of independently variable constituents smallest number of independently variable constituents smallest number of independently variable constituents by means of which the composition of each phase can be expressed directly or in terms of chemical equation right बुझे कौन लिखला पढ़लो गायत्री पढ़ो Sir, can be expressed directly or in terms of chemical equation अबे पढ़लो लिखलो अलीभा the number of components of a system is equilibrium at equilibrium is defined as the smallest number of independently variable constituents by means of which the composition of each phase can be expressed directly or in terms of chemical equation. बस सुनो बुझेबा टिके देखो कंपोनेंट बोले कोन माने वाटर तीनटा फेज अछि सॉलिड लिक्विड और गैस सॉलिड आइस रिवर्स चिन्ह लिक्विड वाटर लिक्विड रिवर्स चिन्ह वेपर VAPOUR तो वाटर तीनटा फेज रे थाए तीनटा फेज आइस रिवर्स चिन्ह लिक्विड रिवर्स चिन्ह वेपर आइस वाटर तीनटा अवस्था तार फार्मूला कोन आइस फार्मूला कोन आइस रो कंपोजिशन कोन H2O लिक्विड फार्मूला कोन लिक्विड वाटर फार्मूला कोन H2O वाटर वेपर फार्मूला कोन same H2O बस तेणु वाटर से आइस हो कि लिक्विड वाटर हो कि वाटर वेपर हो सेम H2O तो वन कंपोनेंट से H2O गोटी आउ के नहीं तो HCN H2O इट इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम तो वाटर इज वन कंपोनेंट सिस्टम राइट व्हाट इज कंपोनेंट वाटर इज द वन कंपोनेंट सिस्टम right smallest number of independently variable constituents by means of which composition of each phase ice phase tar composition H2O liquid water gote phase tar composition H2O water vapor gote phase vapor gote phase tar composition H2O तो से H2O द्वारा same entity same chemical individual
then H2O symbol द्वारा formula द्वारा हम सब फेज को बुझे दे पारुचे तो वाटर होज वन कंपोनेंट सिस्टम राइट तो वाटर होज वन कंपोनेंट सिस्टम बुझौ जी am I right सल्फर Yes, sir. सल्फर चारटा अवस्था थाए रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड सल्फर सल्फर वेपर चारटा फेज रे अछि सल्फर चारटा फेज रे अछि प्रति फेज फार्मूला कोन सिंबल कोन से रोम्बिक सल्फर रो सिंबल S मोनोक्लिनिक सल्फर रो सिंबल भी S लिक्विड सल्फर रो सिंबल भी S सल्फर वेपर रो सिंबल भी S तो व्हाट इज सल्फर कंपाउंड केतला सल्फर One component. वन वन कंपोनेंट सिनी पानी सुक्रोज सॉल्यूशन Sir, sulfur ର last ଟା କଣ କହିଲେ? सल्फर वेपर बाष्प वेपर अच्छा सुक्रोज सॉल्यूशन चीनी पानी केतरा कंपाउंड तार अछि के अछि सुगर सॉल्यूशन चिनी और पानी चीनी और पानी तो कंपाउंड का दो कंपोनेंट one sugar one water the two component Water. system बुझला तो फॉर्मूला लिखो the number of component bracket C समान number of component bracket C समान n capital n minus e बड़ा e n minus e capital E बड़ा n capital N minus capital E where n is the where E is the where E is the number of independent equations number of components C equal to समान कौन sir? समान n capital N not middle n capital n minus E right N minus E. C समान minus C n minus E E where E is the number of independent equations 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 E is the number of independent equations equations relating the concentration of n species relating the concentration of n capital n species n is the total number of species n is the total number of species example दियो ना CaCO3 is equal to CaO plus CO2 CaCO3 is equal to CaO plus CO2 bracket G अच्छा ये कितना फेज तीनटा किंतु कंपोनेंट कितना हो dita किमित जानलो calcium solid गोटे gas गोटे gas नहीं किमित जानलो लेकिन बुझेवा लेखन करू CaCO3 समान CaO plus CO2 CaCO3 के बुझेली केमिति मु CaCO3 गोटे फेज नली CaCO3 समान ताको बुझेली केमिति क्या माध्यम रे CaO plus CO2 तो CaCO3 के मु बुझौ छी का साहाय्य रे calcium oxide and CO2 बस तो इला गला दीटा जिंस संग दीटा स्पेसीज माध्यम रे बुझेली गोटे CaO और गोटे CO2 आ सेई भली तब देखो CaO समान कौन हो कौन लिख परिया CaO समान CaCO3 minus CO2 बुझला नहीं हाँ सर तेणु CaO को केतरा जिंस साथ रे बुझेले मु तीनटा दीटा किए CaCO3 और CO2
बस से हो जाता तो अगेन अगेन CO2 समान CO2 समान केता हो CaCO3 minus CaO. 3SC3 minus CaO. CaO. बस तो CO2 को केतरा जिंस सार बुझैनी ना CaCO3 और Dita. CaO तेणु तो प्रति फेज को मु दुईटे कंपोनेंट साथ रे बुझाउछि तो इट इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम सो दिस सिस्टम इज a two component system this system is a two component system बुझलो बे ताको आउट बुझे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स साथ बुझेबा और तात लोक आउत लेख न CaCO3 ब्रैकेट S समान again CaCO3 bracket S is equal to CaO bracket S plus CO2 bracket G. Applying law of equilibrium, K समान K ला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K समान वर्ग बंधन भीतर CaO वर्ग बंधन माने कौन कंसंट्रेशन मोलार कंसंट्रेशन वर्ग बंधन भीतर CaO प्रोडक्ट डाहाण पट विभक्त बाम पट वर्ग बंधन CaO इनटू वर्ग बंधन भीतर CO2 स्क्वायर ब्रैकेट CO2 होल विभक्त वर्ग बंधन भीतर CaCO3 राइट बुझला कोन लिखला व्हाट इज K Sir, out. CaO कुहतु. square Sir. bracket CaO CaO into square square bracket bracket CO2 by CO2 CaCO3. by square bracket CaCO3 it is solid के solid हो जी CaCO3 और CaO तो solid हाँ, solid is constant देखो we know active masses of the solids active masses or molar concentration देखो active masses or molar concentration of solids are constants so we can write WRITE. So we can write K dash is equal to K dash constant out K dash is equal to वर्ग बंधन भीतर CO2 स्क्वायर ब्रैकेट भीतर CO2 राइट am I right Yes, sir. Yes, sir. केतरा इक्वेशन ला सी ला गोटे इक्वेशन इला गोटे इक्वेशन ला K is equal to CaO CO2 by CaCO3 इक्वेशन 1 सेकंड इक्वेशन ला K dash is equal to CO2 तो केतरा इक्वेशन ला थी दुईटा दीटा तो टोटल स्पेसिस केटा अछि तीनटा के ओटा CaCO3 ओटा CaO ओटा CO2 CaO out of CO2. बस here number of components समान number of components bracket C समान 3 minus 1 is equal to 2 3 minus 1 is equal to 2 बुझला बे तीनटा स्पेसिस के ना CaCO3 CaO और CO2 इक्वेशन ला दीटा 3 minus 2 is equal to 1 ए 3 minus सॉरी इक्वेशन ला गोटी है इक्वेशन केटा ला कंसंट्रेशन लेगी 3 minus 1 is equal to 2 इक्वेशन 2 टा केवल इक्वेशन टा केवल कंसंट्रेशन संबंधी इक्वेशन ला गोटी है कोडा लास्ट टा K dash is equal to CO2 से गोटी है सेटा कांस्टेंट हे गला तो K dash is equal to CO2 सेटा गोटे फाइनल इक्वेशन से गोटी पाइले हमें सेटा गोटी है सेटा मेन इक्वेशन पाइले लास्ट में से कांस्टेंट हे गला CaCO3 कांस्टेंट CaO जो सॉलिड सॉरी कांस्टेंट तो K dash is equal to CO2 ले गोटे इक्वेशन पाइले हमें कंसंट्रेशन रिलेटेड इक्वेशन 1 कंसंट्रेशन रिलेटेड तो हमर कंपोनेंट समान n minus e n हला नंबर ऑफ स्पेसीज e हला नंबर ऑफ इक्वेशंस रिलेटिंग कंसंट्रेशन संबंधी इक्वेशन केटा ना गोटी है तो 3 minus 1 is equal to 2 राइट sir एडी number of component 2 हबो कि 2 हबो 3 minus 1 इक्वेशन कोन एडी इक्वेशन हला गोटी है ए लास्ट K dash equal to CO2 हला कि से गोटी इक्वेशन हां सर अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl
dissociation of NH4Cl. Dissociation of NH4Cl. Ammonium chloride. reaction लिखो. Now NH4Cl bracket S. NH4Cl bracket S one solid. रिवर्स रूल चिन्ह दियो. डाउन पर लगाओ. रिवर्स रूल चिन्ह डाउन पर लगा NH3 bracket G. Ammonia gas. जो तो HCl bracket G. HCl gas. Ammonium chloride केवल हिट कराउची. When ammonium chloride is heated alone in a closed bottle, in a closed vessel, it gives ammonia gas and HCl gas. Right? Now applying law of equilibrium, here K is equal to K is equal to 2. 2. K is equal to Vargabandhani NH3 into Vargabandhani HCl by Vargabandhani NH4Cl. Right? देखिला equation देखिला it is solid K NH4Cl. NH4Cl. बस लगा here NH4 is Cl solid is solid, so its concentration is constant. So its NH4Cl is solid, so its concentration is constant. So its concentration is constant. So now K dash is equal to, so now K operator dash is equal to Vargabandhani NH3 into Vargabandhani HCl. So K dash is equal to Vargabandhani NH3 into Vargabandhani HCl. equation 1. HCl. equation 1 हला. अच्छा एठी आउ गोटे कथा म आगु जिबी. एठी अमोनियम क्लोराइड भांगी छि. अमोनियम क्लोराइड भांगी कोन मिली छि? NH3 plus HCl. अमोनिया जति की HCl सेति की. कारण NH3 पूर्ण किछि ना माने 1, HCl पूर्ण किछि ना माने 1. तो 1 मोल अमोनिया मिली छि, 1 मोल HCl मिली छि. तो अमोनिया जति की HCl सेति की. Now since NH3 and HCl, since NH3 and HCl are present in equimolar ratio, we can write Vargabandhani NH3 is equal to Vargabandhani HCl. Vargabandhani माने concentration. Vargabandhani माने होची concentration. तो Vargabandhani NH3 माने concentration NH3 is equal to Vargabandhani HCl माने concentration HCl. Molar concentration ammonia is equal to molar concentration HCl. Equation 2 देखो. तो कितना इक्वेशन पहला ठीक? कितना इक्वेशन पहला? दुईटा सर. दुईटा पहला. तो कंपोनेंट कितना हो? तीनटा स्पेसीज. तो हियर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ब्रैकेट C समान 3 minus 2. 3 minus 2. Is equal to 1. 1. So it is a one component system. So it is a one component system. So ये जो सिस्टम है one component. So it is a one component system, right? One component. Yes, system. अच्छा सेही सिस्टम रे यदि हमें किछि अमोनिया मिसे दबा किबा किछि HCl मिसे दबा तो कंपोनेंट एक हबनी का दु हे जो पड़ी. Now if a small amount of NH3 or HCl is added to the equilibrium mixture, then the number of components would become, then the number of components would become कितना है जीवो 3 minus 1. इक्वेशन 2 टा ऑप्शन हे गला 3 minus 1 is equal to 2. बुझला. तो सेकंड इक्वेशन बंद हे गला. अदि अमोनिया is equal to HCl इज गुड इक्वेशन. अदि अमोनिया जति की HCl सेति नो HCl अधिक अछि बा अमोनिया अधिक अछि तो इक्वेशन 2 आसीबो नाही. तो एडी कंपोनेंट 2 हे जीवो. बुझला बे? अरे बुझला? हां सर. ना बुझला नि कंपोनेंट कोन?
कंपटे बुझ देलो हाँ सर बुझेला। हाँ सर बुझिला। नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ब्रैकेट वेरिएबल्स तक कोंदी एफ फ्रीडम बोल एफ एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन it is defined as the least number of least LEAST form LEAST least number of variable factors least number of variable factors bracket temperature pressure concentration least number of variable factors कौन कितना variable अछि टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन हले वेरिएबल तीनटा के वेरिएबल कितना वेरिएबल अछि लिस्ट अति कम रे कितना वेरिएबल अछि अति कम रे कितना अछि लिस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ब्रैकेट टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन ब्रैकेट सल्ला which must be specified so that the remaining variables are fixed automatically so that the remaining variables कितना वेरिएबल जणा थिले आ गोटे वैल्यू हम बाहर कर परिबा so that the remaining variables are fixed automatically and the system is completely defined right लिखिला होली कौन लिखिला अली भाई जनाब सर कौन लिखिला decrease of freedom is define the least number of variable factors bracket भितर temperature pressure concentration which must be specified so that the remaining variables are fixed automatically and the system is completely defined good सेटा बुझेला तो हमर प्योर गैस तुम जा हम पढो छी बुझियो छी पले आर यू क्लियरली अंडरस्टूड ट्राई टू लेट यस मी नो सर। कहना तुम कोर्स जा अछि मते 4टा क्लास में आज मोर लास्ट क्लास काली आउ जन सर नेबे बुझला कि आउ गोटे बई पढेबे कहना तर 8टा क्लास मु 4टा क्लास नौ छी आउ दी जन सर के नेबे हला बुझियो छी कि मु जा पढो बुझियो छी तो हाँ सर। हमें अंडर डाउट पचारिबो मो फोन नंबर पचारिबो एनी डाउट इन केमिस्ट्री हला सर अपन फोन नंबर देबे सर फोन नंबर दियंतु सर। हां लिख 9861 88 0166 थैंक यू सर हां एटा हमर व्हाट्सएप नंबर हला हाँ सर एटा व्हाट्सएप तमरे एनी डाउट केमिस्ट्री ऊपर जते जो समरे चाहबो पचारिबो विशेष कर रात्रि पचलम फ्री फ्री कहि देबी का दिन में मु पढि देबी हाँ सर ए केमिस्ट्री एनी सर क्वेश्चन आपन को ना and Dr. Pramod Kumar Das. फोन नंबर Hello. सर फोन नंबर टा आउ थोड़ी टिके कहंते 9861 88 quick 9861 88 0166 okay देखो अच्छा the state of the pure gas हम कितना वेरिएबल अछि माने PV RT जानि छ PV nRT जानि छ कि हाँ सर हाँ हाँ सर। सुनो for 1 mole of gas pure gas ପାଇଁ PV RT P la pressure V la volume R the constant T la temperature ଆମେ constant नबाने केतरा वेरिएबल अछि P V और T अच्छा केतरा वेरिएबल जानिले ଆମେ ଆଉ गोटे वैल्यू जानि परिबा बीटा अदर P V जानिबा T पाइ जिबा नै यस सर। हाँ सर ददबे V T जानिबा P जानि जिबा हाँ हाँ आज्ञा। यदि T और T जानिबा V पाइ परिबा हाँ हमें सर हाँ सर। हाँ सर। तेणु एटी PV RT रही तीनटा अछि P V T एनी टू जानिले हमें थर्ड वेरिएबल कैन बी नोन
बुझिला हम कहली हाँ आज्ञा सर हाँ ताले डिग्री ऑफ फ्रीडम केता हबार प्योर गैस रो 2 2 प्योर गैस now pure gas has 2 degrees of freedom pure gas has 2 PWO বা 2 degrees of freedom बुझिला हम कहली आज्ञा बुझिला हम कहली हां आज्ञा सर अरे प्योर गैस रो पीवी इक्वल आरटी ये तीनटा वेरिएबल अछि पी अछि वी अछि टी अछि आर तो कांस्टेंट ताकू छाड़ वेरिएबल रो तीनटा पी वी टी ये तीनटा भितरु एनी टू जदि हम जानि देबा थर्ड कैन बी नोन थर्ड कैन बी ऑटोमेटिकली नोन तो अरे वेरिएबल आर दीटा डिग्री ऑफ फ्रीडम ने केतना वेरिएबल टू वेरिएबल्स राइट अच्छा और वन कंपोनेंट टू फेज कहला माने वन कंपोनेंट हैविंग टू फेज वाटर वाटर का देखो हेडिंग द वन कंपोनेंट हैविंग टू फेज तो हेडिंग द एग्जांपल रे one component having two phase one plus component having 2 phase example liquid water in equilibrium with the vapor liquid water in equilibrium with its vapor liquid water in equilibrium with its vapor केतरा फेज केतरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होडी सुन टिके एटा बुझा टिके मुकल लिक्विड वाटर त वेपर संगे मिसिक अछि अच्छा गोटे पर्टिकुलर टेंपरेचर रे इट हैज एट इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैन ओनली फिक्स्ड वैल्यू राइट माने सिस्टम सुनो गोटे गिवन टेंपरेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हैज फिक्स्ड वैल्यू आगे बुझा टिके कोन कहूची बुझो माने वाटर अछि वेपर वाटर मतलब 50 सेंटीग्रेड रे 50 सेंटीग्रेड रे टेंपरेचर रे वाटर वेपर प्रेशर होला मनकर 20 वाटर वेपर प्रेशर 20 तो 60 डिग्री रे 20 हबो 30 60 मान 60 डिग्री होला 30 70 रे मन कहला 40 तो गोटे पर्टिकुलर टेंपरेचर रे फिक्स्ड वेपर प्रेशर फिक्स्ड मुझे 50 डिग्री टेंपरेचर जानि देबी मैं जानि देबी यार वेपर प्रेशर निश्चित 30 कि 20 हेतिबो बुझिदा हम कहली सुनो टिके log 10 कहला मन तुम कोन काजिबो log 10 1 log 10 मतलब केते 1 तो log 10 जि जणा अछि मैं जानि इट इज 1 log 100 केते log 100 इज 2 तो log 100 जणा अछि कबे इट इज 2 आ जाने 2 जाने दरकार नाही सेही बडी मु कभी 8 का 0 1 सेही बडी मु जे कहूची लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर तमाने गोटे पर्टिकुलर टेंपरेचर एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर it has equilibrium vapor pressure constant at a particular temperature you know at a given temperature the equilibrium vapor pressure of water can have only one fixed value हम कहूची आउ थरे कहूची माने गोटे पर्टिकुलर टेंपरेचर वाटर नेली वाटर होला लिक्विड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा रे और वेपर प्रेशर 20 50 डिग्री माने 21 हेबनी 19 हेबनी 20 माने 20 तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जणा अछि मु संगे संगे कदिबी वेपर प्रेशर वाटर 20 सही परी 60 डिग्री टेंपरेचर जणा अछि 60 डिग्री सेंटीग्रेड रे तो वेपर प्रेशर फिक्स्ड जानि 60 डिग्री जदि वेपर प्रेशर 30 60 डिग्री जणा अछि मु संगे संगे कदिबी प्रेशर होची 30 तो प्रेशर जणेबा दरकार नाही प्रेशर ऑटोमेटिकली जानि गली सेमति बट टेंपरेचर 70 डिग्री बनकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड रे मु चार्ट देखि चार्ट लिखा है 70 डिग्री प्रेशर ला 40 तो 70 डिग्री लिखा है जदि मु जानि देबी प्रेशर 40 उल्टे देले वेपर प्रेशर 40 दिया है माने मो आखि बजी कर देबी चार्ट देखि कि टेंपरेचर निश्चित है 70 डिग्री सेंटीग्रेड राइट मु कोन कहली हाँ बुझिछि सर हाँ सर तेणु एटी टेंपरेचर जणा अछि माने वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक जणा पड़ी जीवो बा उल्टे देले वेपर प्रेशर जणा अछि माने टेंपरेचर ऑटोमेटिक जणा पड़ी जीवो हम जणया दरकार नाही तो एनी 1 तो आर डिग्री ऑफ फ्रीडम केते हला 1 तो एनी 1 टेंपरेचर जानले प्रेशर ऑटोमेटिक जानिबो द प्रेशर जानले टेंपरेचर ऑटोमेटिक जानिबो एनी 1 जणा थिले आ गोटे ऑटोमेटिक जणा पड़ी जीवो तो ये जो सिस्टम कहली one component having two phase system liquid water in equilibrium with the vapor it has a degree of freedom only 1 right now its degree of freedom is 1 its degree of freedom is 1 now bracket of mono variant MONOVARIANT mono variant next example one component having three phase
one component having 3 phases. One component having 3 phases. 3टा phase दिवो माना से 1 plus water. 3टा phase किए किए? One component having 3 phases coexisting at equilibrium. The ice सुना ice, liquid water और water vapor. 3टा phase एकाठी रहबो केते बेले? सुना टिके 3टा phase एकाठी रहबो केते बेले? ना निर्दिष्ट तापमात्रा निर्दिष्ट चाप रे. A particular temperature or particular pressure at a definite temperature and definite pressure at a constant temperature and constant pressure. Solid, ice, liquid water and water vapor can coexist at the freezing point of water. Coexist at the freezing point of water. This system has no degrees of freedom. Degrees of freedom nahi, किसी variable nahi. कार नहीं, 3टा phase एकाठी रहिबे. लिख दियो ice, liquid water and vapor. Ice, liquid water and water vapor coexisting at the freezing point of water. Coexisting at the freezing point of water. Coexisting at the freezing point of water. Now this system will have no degree of freedom. This system will have no degree of freedom. This system will have no degree of freedom. Bracket is zero variant. ZERO, zero variant. So variable nahi, constant सब zero variant or non-variant. NON, non-variant. NONVARIANT or invariant. INVARIANT, invariant. Zero variant जहा, invariant से या, non-variant से या, degree of freedom zero से या, degree of freedom zero. कहाँ solid, liquid या water vapor, 3टा का गोटे phase रहते solid, liquid और water vapor 3टा phase रहते एकाठी थिबे, एत degree of freedom zero, right? Degree of freedom zero. Particular temperature और particular pressure रे, अत 17 पिला को 8 पिला गले, संबित पटेल. अच्छा, see. Solid, liquid और gas, ice, liquid water and water vapor 3टा का phase coexist करिवे एकाठी रहबे गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा निर्दिष्ट प्रेशर रे. तेणु तब टेम्परेचर जणेवा दरकार नाही कि प्रेशर जणेवा दरकार नाही. अदि ice, liquid water और water vapor एकाठी अछंती इक्विलिब्रियम पॉइंट रे तब टेम्परेचर फिक्स्ड, प्रेशर फिक्स्ड. वेरिएबल नाही. एई टेम्परेचर एई प्रेशर ही हबो. तेणु वेरिएबल और नाही, नो वेरिएबल. Degree of freedom zero, invariant, zero variant, invariant, non-variant. Next heading the conditions for phase equilibrium. Conditions for phase equilibrium. Condition for phase equilibrium. Condition of the chemical potential of a component I. The chemical potential of a component I is same in all the phases. The chemical potential of a component I is same in all the phases. So the data phase अछि, phase A और phase B मनकर सुना गोटे constant temperature pressure रे phase A अछि phase B अछि. Suppose किछि amount small quantity dn transfer phase A ru phase B की मतलब mu1 होछि chemical potential of the component in phase A और mu2 होछि chemical potential of the component in phase B. At equilibrium at equilibrium mu1 is equal to mu2. mu लिखे होछि mu तले 1 हाँ is सर, equal हाँ to सर. mu1 is equal to mu2. Where mu1 is chemical potential of a component mu. ये में भलिया ये में तो एमती बोली दबो. But mu1 is chemical potential of a component. mu1 is chemical potential of a component in phase A. In phase A, capital A, and mu2 is chemical potential of the component in phase B.
or other phase. Mu2 is chemical potential of the component in another phase B. Mu2 is chemical potential of the component in another phase B. By another phase. Right? Now, for any component I, small I, for any component I in the system, comma, the value of chemical potential must be same in every phase. PHASC, provided the system is in equilibrium. Provided the system is in equilibrium at constant T and P. At constant T and P. At constant T and P. T and P. बुझलबे लिख लो Yes, sir. अच्छा हमें और पढ़ेगा कि और 20 मिनट पढ़ेगा कि Yes, sir. हाँ सर अपना sir. डेरिवेशन ऑफ फेज रूल करी लिया डेरिवेशन ऑफ फेज रूल हाँ sir. এটা একটা কোশ্চেন डेरिवेशन ऑफ फेज रूल परीक्षा पढ़ियो डेरिवेशन ऑफ फेज रूल जो हमें कहितले कोन पढ़ितले F = C - P + 2 पढ़ितले कि फेज रूल व्हाट इज फेज रूल आगे F = F is C minus C minus C माइनस C - P + 2 सेटा को डिराइव P करिवा plus जे डिराइव करिवा केमि हेला बाहर करिवा देखो लेट अस सिंगल का मतलब 20 मिनट पढ़ेबा ना लेट अस कंसीडर 20 मिनट पढ़ेबी तापर गोटे मु पठे देबी तुमको स्क्रीन शेयर कर देबी तुम टीपी दो वन वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम रो लेट अस कंसीडर a heterogeneous system. Let us consider a heterogeneous system of C components C संख्या का component अच्छी C components distributed between अरविंद लिखो जाओ distributed between P phases P संख्या का फेज अच्छी ब्रैकेट अल्फा कमा बीटा कमा गामा एम सब P संख्या का फेज अच्छी ब्रैकेट अल्फा कमा बीटा कमा गामा डॉट P phases ब्रैकेट सल्ला in equilibrium with one another देखलो कितना फेज अछि P संख्या का फेज कंपोनेंट कितना ना C कंपोनेंट C1 C2 C3 C इन जो कंपोनेंट अछि अच्छा देखो ना फॉर ईच कंपोनेंट देखो मतलब 10-15 मिनट पढ़ेबी मु फॉर ईच कंपोनेंट गोटे कंपोनेंट बाय फॉर ईच कंपोनेंट कमा देयर आर as many concentration variables as many there are as many concentration variables as the number of phases कौन लिखलो बोले बुझो ये लाइट बोले बुझो for each component कौन लिखलो let us consider for each component there are as many concentration variables as the number of phases जेतिटा फेज अछि सेतिटा कंपोनेंट गोटे कंपोनेंट पाई
बुझिला कि एटी केतरा फेज अछि सुना से कहूची P phases. P phases तेणु concentration हबो गोटे कंपोनेंट बाय P तेणु गोटे कंपोनेंट पाई जदि नबा तो concentration हबो P को केतरा कंपोनेंट अछि अंदाजे ना C संख्या का कंपोनेंट अछि तो टोटल concentration हबो Cp बुझिला बे देखो since number of phases समान P जेहेतु since number of phases समान P टा फेज अछि comma the number of concentration variables केतला समान केतरा बा समान C. हां C. सुबने C. C sir C. concentration variable केतरा हबो C. C किंतो अरे जतिटा फेज नहीं सर P. सुनो म जतिटा फेज सेतिकी कंपोनेंट यदि गोटे कंपोनेंट थिबो जतिटा फेज सेतिटा कंपोनेंट तो फेज यदि P तो कंपोनेंट हो P कि एटा गोटे फेज भाई दीटा कंपोनेंट थिले 2P तीनटा कंपोनेंट थिले 3P हमर C संख्या का कंपोनेंट अछि तो कंसंट्रेशन केते हिजबो C * P समान Cp हिजबो C. समान Cp बुझला ना कोन कहलियो बुझला हरि Cp Okay. कौन Cp Cp टा कोन concentration variable Cp बुझला concentration variable Cp अरे बुझला नहीं Again. हाँ सर हाँ सर. अच्छा concentration बाद besides concentration except concentration आउ दुटा वेरिएबल अछि के ना टेम्परेचर गोटा आउट ऑफ प्रेशर तो समुदा टेम्परेचर गोटे वेरिएबल प्रेशर गोटे वेरिएबल concentration वेरिएबल हला केइटा ना Cp संख्या का तो टोटल वेरिएबल केते हेला टेम्परेचर पई गोटे गुणा n प्रेशर पई 1 concentration पई Cp माने Cp + 1 + 1 = Cp + 2 टोटल वेरिएबल बुझला कोन कहली मु नहीं देखला Again. हां बुझला हाँ सर. now we have two external variables we have two external variables bracketed T and P these are variable goटा T one temperature और P one pressure so total number of variables समान केते गेला CP + 2. बस very good Cp + 2 like question 1 दे दिया Cp + 2 Cp + 2 हला हम सूत्र कोन ना we know इक्वेशन है का एला Cp + 2 गला बुझला कोन कहली Cp + 2 बुझलो नहीं Cp + 2 है हाँ टोटल सर. वेरिएबल अच्छा तापर देखा हम इक्वेशन करेगा total equations now we have to find out the number of equations which are available now we have to find out the number of equations by relations we have to find out the number of we have to Find out the number of find relations, out sir. relations or equations between the variables equation केटा अछि ना कहिला कहना we know सूत्र लगा we know degree of freedom f समान degree of freedom f सूत्र पकड़ दबा degree of freedom f बड़ा f समान total number of variables minus number of relations between them at equilibrium minus total number of variables minus number of relations between them minus number of relations
between them at equilibrium. 10 मिनट क्या करिए देखिए ना total number of variables minus plus Number of number of relation relations between between them. them at equilibrium. तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पाया हेले एफ पाया हेले टोटल नंबर वेरिएबल सीपी प्लस 2 पर जानि गलनी तो हमें बर्तमान नंबर ऑफ रिलेशन काढ देबा रिलेशन काढ देले सीपी प्लस 2 माइनस फेड देले हम आंसर पाइ जिबा बुझियो छी हाँ सर हाँ सर अच्छा देखो 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 क्यों करिया नाउ आवर हेडिंग द इक्वेशंस हेडिंग द heading the condition for mole fraction. Condition for mole fraction. ठीक है नहीं पिले रे आगे लगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस इक्वेशंस पूरे काट देबो हां काट दे देखो अब डाकू जी देखो रिगार्डिंग द नंबर ऑफ रिलेशंस regarding the number of relations for one component existing in three phases existing in three phases comma alpha comma beta and gamma existing three phases alpha comma beta and gamma there are two relations relations कौन कहले पे रिलेशन तीनटा हमर फेज अछि एटा हम कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम पढ़ि देल तमु तापरु कहले μ1 μ2 काइन देले की माने तीनटा फेज ओटा अल्फा ओटा बीटा ओटा गामा तीनटा फेज इक्विलिब्रियम हबो तळे कंडीशन कोन ना μ अल्फा μ बीटा chemical potential in alpha phase is equal to chemical potential beta phase now here mu alpha is equal to mu beta mu तळे alpha समान mu तळे beta and mu beta is equal to mu gamma केता रिलेशन हला ठी सुनो टी पिले अल्फा बीटा गामा तीनटा फेज अछि फेज इक्विलिब्रियम कहउची हम कंडीशन कहउची इक्विलिब्रियम पॉइंट रे तीन समस्त केमिकल पोटेंशियल समान रहइबो तने mu alpha is equal to mu beta is equal to mu gamma तीनटा समान रहइबो तो केटा रिलेशन हला ठी mu alpha is equal to mu beta mu beta is equal to mu gamma तो एठी mu alpha is equal to mu gamma लिखिया दरकार नहीं तो तीनटा फेज अल्फा फेज बीटा फेज गामा फेज तीनटा फेज को इक्विलिब्रियम हो गले केतरा रिलेशन लिखिया पड़िबो हमको लिखिया पड़िबो mu alpha is equal to mu beta mu beta is equal to mu gamma तो mu alpha is equal to mu gamma लिखिया पड़िबो इट इज अंडरस्टूड ता ऑटोमेटिक बुझा पड़ी जाउची जब mu alpha is equal to mu beta लिखि देले एवं mu beta is equal to mu gamma लिखि देले तब हम mu alpha is equal to mu gamma कहया दरकार नहीं अरे हम जानि जे a is equal to b b is equal to c जानि गला माने हम a is equal to c ऑटोमेटिक कह दे परिबा हम के जाने दरकार नहीं को बुझलन कोन कहउची a is equal to b b is equal to c जब हम जानि गले तो a is equal to c इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हमको जाने दरकार नहीं a is equal to c तेनु यदि तीनटा फेज सही परि तीनटा फेज ओटा अल्फा फेज ओटा बीटा फेज ओटा गामा फेज इक्विलिब्रियम पॉइंट रे समान केमिकल पोटेंशियल समान रहइबो अर्थात mu alpha is equal to mu beta is equal to mu gamma तो केता रिलेशन हबो लिखिबा हम लिखिबा mu alpha is equal to mu beta पुल लिखिबा mu beta is equal to mu gamma ए दिटा लिखि देले हमर ऑटोमेटिक जमा पड़ गेला mu alpha is equal to mu gamma एनी टू mu alpha is equal to mu beta लिखो बा mu alpha is equal to mu gamma लिखो ऑटोमेटिक आउट जमा पड़ जाय बुझियो ना बुझियोनी मो कहता बुझियो छी हाँ सर हाँ सर बुझियो छी अरे
बुझियो तो तुम केतरा रिलेशन हाँ दरकार केतरा केतरा रिलेशन दरकार ला तीनटा फेज दीटा भाई दीटा दीटा दुईटा तुम जब चारटा फेज रे केतरा दरकार हो तीनटा अरे तीनटा फेज जली n minus दीटा 1 रिलेशन आज्ञा दरकार हो अदे मु चारटा फेज थांदी तीनटा तीनिटा अदे दरकार पांचटा फेज आज्ञा अदे चारटा पांचटा फेज रे चारटा अदे पीटा फेज रे p minus 1 वेरी गुड लेखो आज two relations are required as two relations are required as data two relations are required for three phases of a component as two relations are required for three phases of a component for three phases of a component comma p minus 1 relations are there p minus 1 relations are there for p phases of a component gote component p minus 1 relations are there for p phases of a component gote component gote component ପାଇଁ ଯଦି p ଟା ସଂଖ୍ୟକ ଫେଜ ଥିବ ତ ରିଲେସନ ହବ p minus 1 ବୁଝିଲା କଣ କହିଲି ମୁଁ କଣ କହିଲି ବୁଝିଲା हाँ सर बुझेला बास ଯଦି ଏଠି ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଠି ଦିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିବ ନା 2 whole into p minus 1 ତ ତିନିଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିବ 3 whole into p minus 1 ଏଠି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ c ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତ ଟୋଟାଲ ରିଲେସନ କେତେ ହବ c whole into p minus 1 now since p minus 1 बास now since there are c components since there are c components so total number of relations saman total number of relations saman total number of relations saman c equal into p minus 1 total number of relations saman c equal into p minus 1 Sir, is equal. total number of relations saman c whole into p minus 1 c component by gote component by p minus 1 c component thile c गुणा हे जीवो p whole into p minus 1 again सरला के सर बुझिलानी सर बुझिलानी बुझे आउ थरे बुझो स्टूडेंट के मु तुम कहतली गोटे कंपोनेंट पई यदि p संख्यक फेज थिबो तो रिलेशन ऑफ p minus 1 एटा बुझी जी हाँ सर एटा बुझिछि गोटे कंपोनेंट पई p minus 1 दीटा कंपोनेंट थिबो c into p minus 1 सर सेला c कंपोनेंट अछि ना मु तुम मूल रे कहजी मु तो प्रथम वाक्य रे कहजी c संख्यक कंपोनेंट अछि बोली की हाँ सर बुझिला सर बस आ गोटे पारा आ 5 मिनिट आ गोटे पारा लिखो आ गोटे पारा लिखो देखो again suppose our relation करेगा again suppose x1 x तले 1 x1 x2 x3 x तले 1 x2 x3 dot x तले c suppose x1 x2 x3 dot xc are the mole fractions bracket लगा concentration are the mole fractions bracket रे concentration of different components in a phase of different components in a phase in a फेज then x1 plus x2 plus x3 plus dot xc is equal to 1 এটা সূত্র আছে মোল ফ্র্যাকশন আরে মোল ফ্র্যাকশন অফ পড়াইলা বেলু কইছিলি মোল ফ্র্যাকশন অফ সলিউট প্লাস মোল ফ্র্যাকশন অফ সলভেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 1 তো এটি মোল ফ্র্যাকশন কতলা x1 plus x2 plus ডিফারেন্ট মোল ফ্র্যাকশন মিশাই দেলে সমস্ত মোল ফ্র্যাকশন মিশাই দেলে হবো 1 এটা সূত্র আছে
here x1 plus x2 plus x तले 3 plus dot 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 plus x तले c component is equal to 1. Now using this equation, the mole fraction of any component, the mole fraction of any component in a phase can be calculated by knowing KNOWING, by knowing the mole fractions of other components. By knowing the mole fractions of other components. अदे मु सुना अदे x2 x3 x6 जानि थिबि x1 पाई परिबि समस्त मोल फ्रैक्शन जानि जळ कर दिया मु पाई परिबि हला से कहूची using this equation the mole fraction of any component in a phase can be calculated by knowing the mole fractions of other components. Full stop. Now for each phase गोटे phase एरा गोटे इक्वेशन अछि. For each phase PHISE, there is one such equation. गोटे phase by इमता गोटे इक्वेशन पाइबो. For each phase there is one such equation. There is one such equation. Equation. यदि phase अछि p संख्या जो तो p टा phase मिलिबो. Here for p phases, the number of phase equations saman p. Number of phase equations saman p. Saman है p टा p phase by p टा मिलिबो. So now total number of equations saman. Now total number of equations saman इला p plus आगुर भातला c equal to p minus 1. एबे भला p total number of equations केते ना p एबे भला p plus आगुर हेतला c equal to p minus 1 केतेला समान माने p plus cp minus p plus cp minus c लगेला. हाँ सर. बस सरला आउ दे मिनट तातो लेखो. Now degrees of freedom bracket f समान. Now degrees of freedom bracket f. Degrees of freedom bracket f समान total number of variables minus total number of equations. सूत्र लिखा दिला गुरु. Degree of freedom सूत्र होला f समान total number of variables minus total number of equations. लिखिलो. हाँ सर हैला. तातो और f समान cp plus 2 हटला अगर इक्वेशन 1 भाग करता cp plus 2 फास्ट पढ़े देली. टोटल वेरिएबल वाला cp plus 2 मान लगी. कांस्टेंट वैल्यू cp, टेंपरेचर गोटे वेरिएबल, प्रेशर गोटे वेरिएबल. टोटल cp plus 2 देला और f समान cp plus 2 ओके cp plus 2 तार माइनस तार ब्रैकेट भीतर लिखो p plus cp minus c ब्रैकेट सरला. अब सरल करो, सिंपलीफाई करो. cp plus 2 minus p minus plus minus cp minus plus cp की cp कटला. केतेला आंसर केतेला p plus 2. c plus 2. बस এটা आंसर c f minus C minus P plus 2. हाँ c minus p plus 2. Correct answer. c minus p plus 2. The answer. This is the equation of phase rule. Now this is the equation of phase rule. अच्छा पिले मु कभी चीनी ग्लूकोज सॉल्यूशन रे
ग्लूकोज सॉल्यूशन कंपोनेंट सी केते एफ केते केते हबो टी केते पहले फॉर एग्जांपल दियो फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन ग्लूकोज पानी एटी केतरा फेज टी केते फेज केटा सॉल्यूशन हला फेज ला 1 पी हला 1 अरे पानी चीनी पानी टा हाँ चीनी सर पानी हाँ पी हला 1 हाँ सी केते नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दुई ताले गोटाला दुई चीनी सर पानी पानी हाँ सर अच्छा अतः एफ समान कहता है एफ समान सी माइनस पी प्लस 2 मेरे 2 minus 1 plus 2 3 1 sir. plus 2 3 3 sir 3 ऐसा degree of freedom 3 तीनटा here 3 variables are there here 3 variables तीनटा variable के 3 variables के ब्रैकेट लगा टेम्परेचर कमा प्रेशर pressure टेम्परेचर कमा प्रेशर एंड कंसंट्रेशन बुझला हाँ सर सुनो एटा बुझला कम फेज बिया बुझला हाँ सर आज्ञा सर बुझिला पाठ बुझियो तो तापर पता लेख मु पठो जी स्क्रीन सर घर लिखि देबो लेख फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम ब्रैकेट वाटर सिस्टम ब्रैकेट रे वाटर सिस्टम वाटर न पढ़े सुनो वाटर तीनटा कर्व थिबो कर्व देखो चित्र देखो तीनटा कर्व हेतिबो ओटा ओ ए मु चित्र पठेबी ओ ए ओ बी ओ सी तीनटा कर्व हेतिबो ट्रिपल पॉइंट थिबो ओटे तीनटा कर्व गोटे बिंदु रे मिलित हेतिबे पॉइंट ओ आ एरिया थिबो तीनटा एरिया ए ओ सी ए ओ बी बी ओ सी ताको तमे बही पढ़ि दबो तम बही रे अछि से केमिस्ट्री 4 फिजिकल बही रे वाटर सिस्टम आउट सल्फर सिस्टम मु तम स्क्रीन शेयर कर पठे दउची तम बही रे डायग्राम करके तम देखि दबा टिके बुझला तर बही अछि नहीं नहीं सर सर नहीं पीडीएफ वाटर अच्छी सॉफ्ट कॉपी अछि नहीं मो सॉफ्ट कॉपी नहीं मते डायग्राम टा पठो स्क्रीन शेयर के पठे दउची ओटे वाटर हाँ सर कर सिस्टम ओटे सल्फर सिस्टम बुझलो हाँ डायग्राम पठो कोन लैंग्वेज थिबो देखि दबा टिके हला वाटर सिस्टम डायग्राम भी होला लिखित गोटे पॉइंट लिखित गोटे पॉइंट water system diagram consists of three curves diagram consists of three curves OA comma OB comma OC OA OB OC OA okay. OA OB OA OB OC सर वो तले कैपिटल ए सर हाँ ओ ए सीधा सीधा लिखा ओ ए ओ बी तो डायग्राम पढ़े ओ ए ओ बी ओ सी ओ ए ओ जी फ्रॉम ओ ए ओ जी ओ ए ओ सी ओ सी ओ सी समान ओ सी समान ओ सी समान वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर ओ सी समान वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर हेलो सर अब वो बी समान फ्यूजन कर्व और मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस सर कौन हां सुबिलानी सर सुना जा सुबिलानी ओ बी समान ओ बी होची फ्यूजन कर्व एफ यू एस आई ओ एन फ्यूजन कर्व और मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस फ्यूजन कर्व और मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस वो ए समान वो ए समान वेपर प्रेशर कर्व ऑफ आइस और सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस और सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस
Sublimation, sir. Sublimation हाँ curve. sir. Degree of freedom bracket is at any point of this curve. Degree of freedom at any point. सर सुना जाओ Degree of freedom. Degree of freedom bracket F. Degree of freedom bracket F. On any point on the curves. On any point on the curves. On any point on the curves is equal to 1. कर्व ऊपर जेकोसी पॉइंट रे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट लगा तो f इज इक्वल टू c माइनस p प्लस 2 f इज इक्वल टू c माइनस p प्लस 2 एंड c वाला 1 कंपोनेंट वाटर सन 1 माइनस 2 प्लस 2 दीटा अछि माने बाहे बोले कर्व ऊपर 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अब हेडिंग द ट्रिपल पॉइंट quick triple point at the triple point at a point तीनटा कर्व गोटा बिंदु रे मिल जायतिले o a o b o c गोटे पॉइंट रे मिल जायतिले पॉइंट o रे the three curves o a o b curves o a o b and o c curve o a o b and o c meet at a point o meet at a point o called तीनटा पॉइंट तीनटा ए गोटे पॉइंट तीनटा कर्व मीट हेछि हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम f is equal to here three phases coexist here three phases bracket ice comma water comma vapor तीनटा फेज ice comma water comma vapor coexist तीनटा फेज एकाठ रहबे coexist so f is equal to c minus p plus 2 is equal to 1 minus 3 plus 2 is equal to 0 f is equal to 1 minus 3 plus 2 is equal to 0 triple point is invariant zero variant non variant so system is invariant then हम स्क्रीन शेयर कर देबे system is invariant at the triple point at degree of freedom 0 on the what question by triple point at degree of freedom 0 देखो हम स्क्रीन शेयर करछि वाटर सिस्टम रो तापर सल्फर सिस्टम पर पढ़ि देबो हला देखो अपने स्क्रीन शेयर करछि देखा ठीक है देखा पठो स्क्रीन शेयर करगी सुनो पठो प्ले ट्रिपल पॉइंट रे सर डिग्री ऑफ कोटा 0 फ्रीडम कहले 0 ट्रिपल पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 0 वेरिएंट स्क्रीन शेयर करो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मैं स्क्रीन शेयर करछि एटा पठैली एटा पठो देखिलो आज्ञा सर आज्ञा हां एटा टिपि दबो एटा क्लासेस क्लापर इक्वेशन उडा अछि मैथमेटिक्स लिखिलो न लिखिलो है डायग्राम टा कर दो खाली सर डायग्राम टा शो होने तो होने हबो डायग्राम शो हबो ठीक है ऊपर और को देखो ए डायग्राम टा शो हबो हला आबे आज्ञा सर ए डायग्राम टा खाली कर दबो वाटर सिस्टम डायग्राम कर नंबर पाई जीवो आ मु जा डाकले लिखि दबो एटा वाटर रो आज्ञा हला सर फोटो उठेलो सर एटा बुक रो को नंबर पेज टा सर बुक रो फोर बुक ब्लॉक 1 रो लास्ट यूनिट हाँ सर तापर डायग्राम पठो
पॉइंट 0 डिग्री फ्रॉम 0 एबे केते पिला अछ रे एटा सल्फर सिस्टम सेकेंड सल्फर सिस्टम चला फेज डायग्राम सल्फर सिस्टम एटा अलग टिपि दो हाँ सर कर देलु गुड एटा सल्फर सिस्टम एटा कर दला हाँ सर कर देलु अच्छा एटा वाटर कर दो मतलब पिला केते अछ जॉइन करछ केते पढ़लेनी केते अछ मोर देन 10 तो हाँ सर 9 to केते मोर देन 10 और कम 11 ओके वेरी गुड अच्छा आउ की डाउट अछि एनी डाउट नहीं तो नो सर ठीक है मोर फोन नंबर रखलो डाउट ले पचारी वाला हाँ एनी सर हाँ चैप्टर हाँ एनी केमिस्ट्री एनी हाँ ठीक है थैंक यू ऑल थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. सर Thank थैंक you, यू sir. सर Thank you, sir. थैंक यू